Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Shima Datta. In this video, I will explain about dialectical materialism of Karl Marx. Before explanation, I would like to give you a brief description about Marxism. So let's start. Karl Marx, a German philosopher, was the father of Marxism. Marxism is some political economic principles which work as the scientific base of establishing socialism. Marxism tries to describe the human society from the historical point of view where two opposite classes or powers remains in conflict. The basic principles of socialist philosophy of Marx are classified into some categories. They are dialectical materialism, materialistic interpretation of history, doctrine of class struggle, and theory of surplus value. Dialectical materialism कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन से प्राप्त वास्तविकता के लिए एक फिलोसॉफिकल अप्रोच या दृष्टिकोण है। मार्क्स एंड एंगल्स के लिए मटेरियलिज्म मीन्स मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ मन या आत्मा को सच्चा स्वाधीनता मिलता है। Hegel was the chief exponent of dialectical method. The word dialectical originally referred to the process whereby ideas are formed and clarified in the course of intellectual debate. Dialectical materialism का सर्वप्रथम प्रतिपादन हीगेल द्वारा किया गया था। The word dialectical is a process जहाँ आइडियाज़ फॉर्म होता है और स्पष्ट किया जाता है इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक बहस के दौरान। Hegel propounded the belief through his dialectics that all development or evolution proceeds not in a straight line but in a zigzag manner, following the formula of thesis, antithesis, and synthesis. According to him, history shows that men go from despotism, that is thesis, to democracy, antithesis, and finally reaction from unlicensed democracy leads them not back to democracy but to constitutional monarchy, that is synthesis. According to Hegel, डेवलपमेंट और इवोल्यूशन सीधी प्राप्ति नहीं होता है, परंतु टेरा मेरा जिगजैग मैनर, टेरा मेरा तरीके से होता है। हीगेल की डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म थेसिस वाद, एंटीथेसिस प्रतिवाद एंड सिंथेसिस संवाद की प्रक्रिया है। थेसिस एक विचार की पुष्टि करता है, एंटीथेसिस उसका विरुद्ध या निषेध करता है, एंड सिंथेसिस थेसिस और एंटीथेसिस में जो सत्य है उसे स्वयं में समाहित करता है और इसी तरह वो हमें यथार्थ के अधिक निकट ले आता है। हीगेल ने कहा, मनुष्य डेस्पोटिज्म यानी कि थेसिस से डेमोक्रेसी या एंटीथेसिस एंड फाइनली अनलाइसेंस्ड डेमोक्रेसी तक मूव नहीं कर पाता, परंतु सिंथेसिस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ओर मूव करता है। Marx dialectical materialism is a philosophy of science, history and nature developed in Europe. Though Marx was greatly impressed by the Hegelian logic, he rejected Hegelian idealism
For Hegel, the ultimate reality is reason or spirit. For Marx, it is matter in motion. The goal towards which the dialectical materialism is moving is the society perfectly organized for production in which there shall be no class distinctions or exploitation. मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म साइंस, हिस्ट्री एंड नेचर का दर्शन है जो यूरोप में विकास हुआ था। मार्क्स के मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद विकासवान है, परंतु यह विकास द्वंद्वात्मक प्रकार से होता है। इस प्रकार मार्क्स हीगल के विचारवाद का विरोधी है। मार्क्स इंटेंड्स टू यूज हीगेलियन डायलेक्टिक्स इन रिवाइज्ड फॉर्म। मार्क्स और हीगल का व्यू था कि विरोधी तत्वों के संघर्ष द्वारा ही सत्ता की प्रतिष्ठा होती है। फॉर हीगल, the ultimate reality is reason or spirit. On the other hand, for Marx, it is matter in motion. Hegel's philosophy के लक्ष्य था to find out the truth. On the other hand, Marx philosophy के लक्ष्य था to establish a classless society. Marx's dialectical materialism is based on the following three laws. First one is the transformation of quantity into quality and vice versa. This law professes that change takes place by quantitative transformation until there arises a point which Hegel calls the node beyond which a thing cannot vary while remaining the same. The first law was the transformation of quantity into quality. All change has a quantitative aspect. There is a continuous struggle between the opposite forces, and this struggle, according to Marx and Engels, all sorts of progress का जड़ है। उत्पत्ति का परिवर्तन from lower to higher, from quantitative to qualitative, is never slow or gradual. The classical illustration is the change of a state of a substance as when water turns to steam at 100 degrees Celsius and into ice at 0 degrees Celsius. Just as the change occurs abruptly, so that water is at one moment water, at the next moment steam or ice, likewise the progress of humanity is not affected by the gradual process of growth but by sudden jumps. Marx calls the jumps revolution and its inevitability. Monopoly capitalism represents the last stage beyond which it cannot develop. Having come into existence, it will develop quantitatively until the point is reached when the dialectical leap occurs and it passes into socialism. जैसे कि समझ लीजिए वाटर एक सब्सटेंस है। वाटर को स्टीम करने से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और आइस बनता है 0 डिग्री सेल्सियस में। यह परिवर्तन होता है एब्रप्टली, इसीलिए कि वाटर इज एट वन मोमेंट वाटर, एट द नेक्स्ट मोमेंट स्टीम और आइस। इसी तरह मनुष्य का उन्नति ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के द्वारा प्रभावित नहीं होता, पर एक सडन जंप्स के द्वारा होता है। मार्क्स इन इस सडन जंप्स को
रिवॉल्यूशन कहा और इसके होना इनएविटेबल यानी कि ज़रूरत है। मार्क्स ने मोनोपोली कैपिटलिज्म को विकास के लास्ट स्टेज बताया और जब यह एग्जिस्ट होगा तब इट विल डेवलप क्वांटिटेटिवली अर्थात मात्रात्मक रूप से और फाइनली passes into socialism. The second law is the unity of opposites. This asserts not only the contradictory nature of reality but also that contradictions thus revealed exist in unity. So far from being opposites, positive and negative express no absolute difference, just as a road to the east is also a route to the west. These opposites are independent. In a capitalist society, the bourgeois and proletariat are thus connected. Though both are opposite to each other, neither of them can develop without the other. The second law is the unity of opposites is the central category of dialectics. ये एक सिचुएशन है जहाँ existence of a thing or a situation which are opposite to each other yet dependent on each other. जैसे कि a road to the east is also a route to the west. दोनों ईस्ट एंड वेस्ट इंडिपेंडेंट है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में द बोर्गिस एंड द प्रोलेटारिएट आर अपोजिट टू ईच अदर, पर दोनों के बिना विकास नहीं कर सकता, दोनों पर डिपेंडेंट है। द थर्ड लॉ इज द निगेशन ऑफ द निगेशन. Thesis, antithesis and synthesis are forms or stages of development. The thesis breaks down by reasons of its internal contradictions and gives way to the antithesis, which attempts to remove those contradictions. That also breaks down for the same reason and synthesis is developed. The synthesis negates the antithesis, which is first negation, and it is the negation of the negation. Negation of the negation. The negation of the negation का अर्थ है निषेध के निषेध, प्रतिवाद के प्रतिवाद. The law of the negation is a concrete form of the law of the unity of opposites. That is the law of the struggle of opposites and the resolution of their contradiction. The law of the negation was first formulated by Hegel. According to this law, development takes place in cycles, each of which consists of 3 stages: the original stage of the object, that is thesis, its transformation into its opposite, antithesis or negation, and the transformation of the opposite into its own opposite, that is synthesis. Synthesis negates the antithesis, which is the first negation, and it is the negation of the negation. The above can be illustrated by the trio feudalism, capitalism and socialism. The internal contradiction of feudalism lead to its negation by capitalism, which represents an advance over the earlier state. The internal contradictions of capitalism lead to socialism, which is the negation of the negation.
All this can be illustrated by the trio. Trio means तीन समूह के द्वारा, वो है फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। फ्यूडलिज्म का अर्थ है सामंतवाद, कैपिटलिज्म है पूंजीवाद और सोशलिज्म है समाजवाद। फ्यूडलिज्म के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन कैपिटलिज्म के द्वारा विरोध किया जाता है, जो पहले स्टेट या अवस्था पर एडवांस रिप्रेजेंट करते थे। कैपिटलिज्म के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस सोशलिज्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसे निगेशन ऑफ द निगेशन अर्थात सिंथेसिस कहा जाता है। Criticisms. Critics find fault with the dialectical materialism of Marx. Number 1. According to Sabine and Weber, Marx never worked out his ideas in detail. The reason may be that Marx was more interested in law, politics and economics rather than philosophy. Marx के dialectical materialism clear and detailed नहीं है। उनके आइडियाज़ रिगार्डिंग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म स्पष्ट नहीं है और डिटेल नहीं है। इसके कारण ये भी हो सकता है कि मार्क्स फिलोसफी से ज़्यादा इंटरेस्टेड था लॉ, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में। Then number 2, the view of Hallowell is that Marx himself was not a profound philosopher. Whatever profundity his system has was borrowed from Hegelian philosophy. हेलोवेल का कहना है मार्क्स खुद ही एक गंभीर फिलोसोफर नहीं था। उसके सिस्टम के जो भी गहराई है वो उसने हिगेलियन फिलोसफी से उधार किया। नंबर 3, Playmeners is of the view that dialectical materialism is not a theory at all. It is a kind of preliminary model to prepare the mind for historical materialism, which no more rests on it than a ship does on its own reflection in the water. Playmeners के कहना है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज़ नॉट ए थ्योरी एट ऑल। ये हिस्ट्रिकल मटेरियलिज्म के लिए माइंड को प्रिपेयर करने का एक प्रकार का प्रारंभिक तैयारी है, जो जहाज पानी में अपना प्रतिबिंब स्वयं करने की तुलना में उस पर अधिक टिका नहीं है। नंबर 4, प्रोफेसर हंट सेज दैट the claim of Marx that it constitutes the scientific approach to reality cannot be accepted. It is not in fact scientific at all, because we are never sure what constitutes a thesis, antithesis and synthesis. प्रोफेसर हंट ने कहा है कि मार्क्स का दावा है उसके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म रियलिटी यानी कि वास्तविक रूप में एक साइंटिफिक अप्रोच है। इट कैनॉट बी एक्सेप्टेड, इट इज़ नॉट साइंटिफिक एट ऑल, कारण हम लोग कभी भी श्योर नहीं है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए thesis, antithesis and synthesis. It may be concluded that though Marx had claimed that by his dialectical materialism he had turned Hegelian dialectics right side up, his claim is not completely true, though it may be partially accepted because it has its internal defects. It may be concluded that जहाँ तक कि मार्क्स का दावा है उसने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के द्वारा हेगेलियन डायलेक्टिक्स को साइड में रख दिया, उसके दावा कम्प्लीटली सच नहीं है, हालांकि इसे पार्शियली एक्सेप्ट किया जा सकता है बिकॉज इसके कुछ इंटरनल डिफेक्ट्स है।
Dear friends, please support my channel with a like and subscription and share it.